बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सुनो टुनाइट विद सादिया अफजाल। इस वक्त हम लंदन में मौजूद हैं। मेरे अक़ब में आप ये बरतानिया की पार्लियामेंट की बिल्डिंग देख रहे हैं। रिवर टेम्स का ये खूबसूरत मंज़र आपको यहाँ पर नज़र आ रहा है। बिग बेन मशहूर, आप अगर मेरे बाएं जानिब देखेंगे तो आपको यहाँ से लंदन आई भी नज़र आएगी। यहाँ इस वक्त बरतानिया की पार्लियामेंट में आने का मकसद हमारा क्या है, पहले तो वो बताते हैं जो आज के प्रोग्राम में डिस्कशन होने जा रही है और जिन लोगों से हम आपको मिलाने जा रहे हैं। एक तो आप देख रहे हैं कि लंदन की सर्दी है और इस वक्त हल्की हल्की बारिश भी यहाँ पर हो रही है। यहाँ पाकिस्तान की तरफ से एक बैकग्राउंड के साथ हमारे मुख्तलिफ सूबों, हमारे मुख्तलिफ शहरों के बैकग्राउंड के साथ इस पार्लिमान के जो रुकन मुंतखब हुए हैं लोग और बहुत अरसे से, बहुत सालों से यहाँ की सियासत में, यहाँ की मईशत में, यहाँ की कानून साजी में अपना किरदार अदा कर रहे हैं, उनसे हम आपको मिलाएंगे। जो यहाँ पर आजकल इश्यूज़ ज़ेर बहस हैं या कहना चाहिए कि सर फहरिस्त हैं, उनका हम जिक्र करेंगे। मिसाल के तौर पे हमेशा हम इस्लामोफोबिया की बात करते हैं। यहाँ पर कितना बड़ा चैलेंज है हमारे तमाम इन अरकान पार्लिमान के लिए जो कि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हैं या फिर हाउस ऑफ कॉमन्स में हैं, कि उस पर कोई काम कर सकें। मुसलमानों को और ओवरऑल भी अगर हम देखें, एक जो ह्यूमैनिटेरियन इश्यूज़ नज़र आते हैं, चाहे वो कश्मीर का मामला है, चाहे वो फ़लस्तीन का मामला है, उस पे किस तरीके से अपना किरदार अदा कर रहे हैं। यहाँ एक बात ये भी हमें मद्देनज़र रखनी चाहिए कि बहुत सारे ऐसे अरकान भी हैं जो यहाँ अपने इलाके के लोगों की तरफ से, जो अपनी कॉन्स्टिट्यूंसीज़ हैं उनकी तरफ से, जिन्होंने उनको वोट करके MP बना के हाउस ऑफ कॉमन्स में भेजा है, उनकी तरफ से काफ़ी तनकीद का शिकार भी रहते हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह ये है, ये मैं किन MPs की बात कर रही हूँ, उन MPs की जिन्होंने जो अभी गाज़ा में सीज़ फायर के लिए जो वोटिंग हुई थी उसमें उन्होंने एब्सटेन किया, उसमें अपना वोट जो है वो नहीं डाला। तो ऐसे MPs के हवाले से भी हम बात करेंगे। और यहाँ पर भी अगर हम देखें, जो बरतानिया की जमहूरियत है, जो बरतानिया का एक सियासी निज़ाम है, यही हम पाकिस्तान में भी फॉलो करते हैं। अगर आप हाउस ऑफ कॉमन्स को देखें तो वहाँ पर इलेक्टेड मेंबरान आते हैं जिसकी इस वक्त तादाद जो है वो 650 है। हाउस ऑफ लॉर्ड्स को अगर आप देखें तो वो भी पाकिस्तान के एक सेनेट की तरह है, जो अपर हाउस जिसको आप कहते हैं। और करंट हाउस ऑफ लॉर्ड्स में जो मेंबरान है इस वक्त वो 718 हैं। तो दोनों हाउसेस भी आपको दिखाते हैं और दोनों हाउसेस के जो पाकिस्तानी नजाद यहाँ पर रुकन हैं पार्लिमान के, उनसे भी आज के प्रोग्राम में आपकी हम बात करवाएंगे। स्टे ट्यून्ड। आज के प्रोग्राम में जैसे इंट्रो में आपको बताया कि यहाँ पर जो पाकिस्तानी नजाद अरकान पार्लियामेंट हैं, वो क्या पाकिस्तान के बारे में, पाकिस्तान के हालात के हवाले से राय रखते हैं, यहाँ उनके लिए क्या चैलेंजेस हैं। और अब ख़ास तौर से जब फ़लस्तीन का मसला हर जगह पर ज़ेर बहस है, उसमें बहुत ज़्यादा हमारे ऐसे अरकान पार्लियामेंट हैं, बरतानवी पार्लियामेंट, जो अपना किरदार अदा कर रहे हैं। कश्मीर के मसले के हवाले से हमेशा एक भरपूर किरदार अदा करते रहे हैं, अपनी आवाज़ उठाते रहे हैं। सो इसी सिलसिले में इस वक्त हमारे साथ अफजल ख़ान साहब मौजूद हैं। और अफजल ख़ान साहब के हवाले से मैं इतना कहूँगी कि चाहे वो फ़लस्तीन का मसला हो या कश्मीर का मसला हो, बहुत तवाना एक आवाज़ है उनकी हर फोरम पे। यूरोपीय यूनियन के भी पार्लियामेंट रह चुके हैं। 2017 के अंदर जब बरतानवी रुकन पार्लियामेंट मुंतखब हुए तो उर्दू ज़बान में हलफ ले के एक और तारीख़ भी जो है वो भी रकम की। बहुत शुक्रिया अफजल ख़ान साहब। जी, आपको भी मैं वेलकम कहता हूँ। आप यहाँ पार्लियामेंट के अंदर आई हैं। इट्स अ प्लेजर टू हैव यू। थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो बताइए कि इतने अरसे से सियासत यहाँ पर करते हुए अपने लिए इस वक्त इतने सालों के बाद क्या चैलेंज सबसे बड़ा देखते हैं? जी, यहाँ पे मैं समझता हूँ कि जो मुसलमान हैं इनके लिए नंबर 1 जो चैलेंज है वो इस्लामोफोबिया है। वो ये मैं इसलिए कहता हूँ नंबर 1 है क्योंकि इसकी जो परमिटेशन है सोसाइटी के अंदर हर शोबे के अंदर होती है और इसका फिर इम्पैक्ट भी इसी स्केल पे होता है। और हमारी जो आइंदा आने वाली नस्लें भी हैं उनको भी बहुत ह्यूज इम्पैक्ट होता है। तो मैं समझता हूँ जो 4 मिलियन मुसलमान यहाँ पे आबाद हैं थ्रू आउट मुस्लिम वर्ल्ड से, उनके लिए ये बहुत बड़ा मसला है और इस पे हम बहुत काम भी कर रहे हैं और अच्छा खासा हमने प्रोग्रेस भी किया हुआ है। अब इस वक्त जो मुश्किल है वो पर्टिकुलरली टोरी गवर्नमेंट की तरफ से आ रही है। 2018 में यहाँ पे हमारे पास APPG है जो ब्रिटिश मुस्लिम्स के इश्यूज़ को देखती है। तो उन्होंने मिलकर बाकायदा एकेडमिक को लेके, लॉयर्स को लेके, पॉलिटिकल कम्युनिटी लीडर्स, फेथ लीडर्स को लेके एक डेफिनेशन तैयार किया था
जिस के थ्रू हमें पता चल सके, जो मेयार हो कि ये चीज़ इस्लामोफोबिक है। तो उसकी हमें अच्छी खासी प्रोग्रेस की है। बहुत सी पॉलिटिकल पार्टी, बल्कि मैं ये कह सकता हूँ तमाम पॉलिटिकल पार्टी एक्सेप्ट टोरी पार्टी जो कंजर्वेटिव पार्टी है, जो गवर्नमेंट के अंदर है, सब ने इस डेफिनेशन को एक्सेप्ट किया हुआ है। तो आप ये कह सकते हैं कि जितने भी यहाँ रिलीजियस डिस्क्रिमिनेशन चीज़ें होती हैं, आधी जो होती हैं वो मुसलमानों की होती हैं, बाकी सब में तकसीम होती हैं। तो ये स्केल है, तो क्लियर एविडेंस है। ये गवर्नमेंट का चैलेंज जो है वो ये है कि इस्लामोफोबिया से आपने किस तरीके से लड़ना है। अफजल खान साहब के हवाले से भी बता दें कि हमने पहले भी जिक्र किया था कि 50 लेबर एमपीज़ ऐसे हैं जिन्होंने गाज़ा के अंदर सीज़ फायर के हक़ में वोट दिया। कुछ ऐसे भी हैं जो कि पाकिस्तानी नजाद हैं, बरतानवी अरकान पार्लियामेंट, लेकिन उन्होंने एब्सटेन किया। उस पर भी मैं ज़रा बाद में आती हूँ कि क्यों किया और क्या वजूहात थी। लेकिन अफजल खान साहब ने रिज़ाइन भी किया। आपने क्यों ये समझा कि इस वक्त ये इस्तीफ़ा देना, रिज़ाइन करना ही एक मुनासिब कदम है? जी, पहली बात तो ये है कि ये जो फ़लस्तीन का इशू है, ये नया इशू नहीं है। ये बेसिकली कश्मीर की तरह बहुत पुराना है। ओवर 75 इयर्स का इशू चल रहा है। यूएन के मुताबिक भी रेजोल्यूशंस वहाँ पे पड़े हुए हैं कि इसका सलूशन क्या है, इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से वो भी पड़े हुए हैं। लेकिन हम ये देखते हैं कि ये दोनों मसले हल नहीं हो रहे। अभी इस वक्त जो गाज़ा की सिचुएशन है वो अगेन सामने है। और मुझे रिज़ाइन करने का इसलिए हुआ था कि जो मेरी पार्टी है उनकी जो पोजीशन थी वो मुझे एक्सेप्टेबल नहीं थी। उसकी पोजीशन मैं ये समझता था कि जिस मकदार में जो इनसेंट फ़लस्तीनियन हैं उनके नुकसान हुआ है, जो सिविलियन हैं, जो औरतें हैं, जो बच्चे हैं, इस वक्त कोई 8,000 तक हम पहुंच चुके हैं। जो बच्चे थे उनका तो कोई कसूर नहीं हो सकता ना, बाकी किसी का तो आप कह सकते हैं आर्गूमेंट के है या नहीं है। तो जब इस स्केल पे लॉसेस हो रही हैं तो हमें सीज़ फायर ना कहना ये ख़ुद जुर्म नज़र आता है मुझे। तो इस वजह से फिर मैंने आपने बड़ी अच्छी बात की जो मैंने कहा था कि कुछ ऐसे लोग भी हैं जिनके हवाले से आई डोंट नो कि वो अपनी कॉन्स्टिट्यूएंस को किस तरीके से फेस करेंगे, जिन्होंने इस मामले पर एब्सटेन किया है। क्या वाकई इतना ज़्यादा सियासी प्रेशर होता है, इतनी कोई पॉलिटिकल रीजंस होती हैं कि आप इतने बड़े इशू पे भी वोट ना करें? मैं देखिए जी, मैं किसी और पे जजमेंट नहीं करना चाहता। हर एक को इसको वे अप करना पड़ता है। तो जब आप सियासी मैदान में आए हुए हैं, तो जब वोट हो रही है तो वोट जो होती है वो तो अमानत की लेवल पे होती है। तो जिसका हक बनता है, जिस जगह पे हक बनता है उस पे वोट, वहाँ पे वोट देनी चाहिए। तो हर एक को सोचता है। लेकिन मैं समझता हूँ जो अगर सोच की बात इसमें है तो ये है कि जिस पे मैं भी गुज़रा हूँ, मैंने भी इस बारे में सोचा है। वो ये है कि एक बात होती है असूल की, तो आप असूल पे डट जाते हैं, कॉन्सिक्वेंस को नहीं देखते। दूसरा होता है प्रैग्मेटिक लेवल पे सोच रखना, और वो ये देखता है कि अगर हमने ये चीज़ किया तो इससे क्या फ़ायदा होगा, कोई फ़ायदा होगा और इसके साथ नुकसान क्या होगा। तो उस फ़ायदे और नुकसान को जब आप तोल में लाते हैं, वेइंग अप करने में, तो उस वक्त फिर ये बात भी आती है कि अगर आप वोट करेंगे तो ये सीज़फायर तो नहीं होगी, क्योंकि यहाँ की दो बड़ी जमातें जो हैं वो वोट उसके ख़िलाफ़ कर रही हैं, तो ये थ्रू नहीं होगा। तो अगर आप किसी ओहदे पे बैठे हुए हैं तो आप फिर उसके ख़िलाफ़ बात करेंगे तो फिर ये अगेन पोजीशन आ जाती है कि आपको रिज़ाइन करना पड़ता है। तो फिर जो दूसरे काम आप कर सकते हैं वो भी फिर आप नहीं कर सकते। तो ये वो लॉस है। तो आपने सबसे पहला जो चैलेंज करार दिया इस्लामोफोबिया, फिर अभी फ़लस्तीन का मसला ऑब्वियसली आप उजागर कर रहे हैं, कश्मीर का जिस तरह से आपने कहा। फ़हीम कियानी साहब भी इस वक्त हमें ज्वाइन कर रहे हैं प्रोग्राम में, जो कि तहरीक कश्मीर के प्रेसिडेंट हैं यहाँ यूके के अंदर। फ़हीम कियानी साहब, जिस तरह ऑब्वियसली हर जगह पर अभी फ़लस्तीन के हवाले से बात हो रही है, पार्लियामेंट्री लॉबिंग आप कर रहे होते हैं, कश्मीर का फ़ोरम आप यूनाइटेड नेशंस के फ़ोरम पे भी आप कश्मीर को, इस इशू को लेकर गए हैं, रेस किया है। क्या कश्मीर के हवाले से भी उतनी ही बात हो रही है जितना फ़लस्तीन पे? बहुत शुक्रिया। मैं ये समझता हूँ कि फ़लस्तीन और कश्मीर का कंपैरिजन उस तरीके से नहीं होना चाहिए, क्योंकि फ़लस्तीन यूरोप का लोकल इशू है और 3 बड़े रिलीजन का मरकज़ भी है, जुडाइज़म का, क्रिश्चियनिटी का और इस्लाम का।
तो यूरोप के साथ गुज़िश्ता 12-13 सदियों से फ़लस्तीन के साथ डायरेक्टली इनके कनेक्शंस भी हैं। एज़ ए बैनुल-अक़वामी इशू में देखा जाए तो कश्मीर इशू सबसे ज़्यादा इस पार्लियामेंट में हाईलाइट भी हुआ है, इस पे सबसे ज़्यादा मोशंस भी टेबल हुए हैं और डिबेट भी हुए हैं। तो जो फोल्स नैरेटिव है इंडिया का कश्मीर पर कि कश्मीर इज़ इंटेग्रल पार्ट ऑफ इंडिया, सिर्फ ना कि ब्रिटिश पार्लियामेंट बल्कि दुनिया का कोई ऐसा एक मुल्क नहीं मिल सका इंडिया को जो इस नैरेटिव की तायद करे। यहाँ पर भी जब डिबेट होती है पार्लियामेंट के अंदर तो सिर्फ जो इंडियन जो के हक़ में बोलने वाले जो एमपीज़ हैं वो 2% होते हैं, 98% जो एमपीज़ हैं वो कश्मीर के हक़ में बोलते हैं, वो कश्मीर के हक़ उदरादियत के हक़ में बोलते हैं। तो मैं समझता हूँ कि कश्मीर को यहाँ पर ड्यू कवरेज मिल रही है और 2019 के बाद जो 5 अगस्त 2019 के बाद जो मोदी ने इक़दाम किए हैं, जितना प्रेस के अंदर कश्मीर को कवरेज मिली है वो शायद 2019 से पहले नहीं मिली। सो हम मसला फ़लस्तीन पे बात कर रहे हैं, मसला कश्मीर पे बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो लोग हैं जिनको ये मौका मिला है कि पार्लियामान में और यूके की सियासत में अपना किरदार अदा कर सकते हैं, गवर्नमेंट्स को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, वो किस तरीके से इस जानिब बढ़ रहे हैं। अफजल ख़ान साहब ने इस्लामोफोबिया का भी जिक्र किया था। यहाँ पर ख़वातीन के हवाले से जो मुसलमान ख़वातीन हैं उनके लिए क्या हो रहा है, उनके हकूक़ के लिए क्या हो रहा है। इसी तरीके से इस वक्त हमें जो प्रोग्राम में ज्वाइन कर रही हैं, पहले तो मैं इनका तारुफ़ करवा दूँ, बैरोनेस शाइस्ता गौहर हैं इस वक्त। Thank you very much for joining us. And my first question to you is Muslim women here in the UK. क्या issues हैं जो सबसे ज़्यादा face कर रही हैं? Well, in the UK, there's a population of 4 million Muslims and 2 million Muslim women. There are many issues. One of the biggest issues is hate crime. Then there's discrimination when accessing, for example, health services or the job market. There's also violence against women and girls. So I run the only national Muslim women's charity in the UK called the Muslim Women's Network UK. We have a helpline, so we have many callers on many different issues. And all of that work, that 20-year journey, has led me into Parliament. So I'm now in the House of Lords, but I'm a crossbench peer, which means that I'm not associated with any political party, which is good, because which means that I don't have any pressure from political leaders to not say a particular thing or say a particular thing or vote in a particular way. So now broke ranks. Yes, and I'm glad that he did, and we need politicians like Afzaal who are going to break ranks to ensure that the voices of not just Muslims, because for example the Gaza and Palestine issues, there's people across faiths and backgrounds that are very angry about that issue. And actually Muslim Women's Network, our members were very angry as well. They were saying things like, we don't want to vote, we don't know who to vote for. Then we ended up at Muslim Women's Network, we ended up doing an open letter which we sent to the Prime Minister and also the leader of the opposition, Sir Keir Starmer, and around about 100 people signed that letter, which is online, asking for an immediate ceasefire, allowing humanitarian aid, and not just a temporary ceasefire, a permanent ceasefire. It's almost, people are very angry. It's almost, there's a hierarchy of human rights. Some human rights matter more, some less, and Muslims believed that Palestinians have been dehumanized by political leaders across And the it's not just a Muslim issue, it has become a humanitarian issue now. Absolutely. I mean, there are trucks waiting outside the borders getting in this. People have generously given donations, but unfortunately, no one is able to get in to actually give aid. So I've just come from, I went to the Doha Forum in Qatar, and it was a 2-day conference, and the main theme throughout the 2 days was what is happening in Gaza and the failure of world leadership. And they're obviously trying to use their diplomacy to try and do more to try and get people on side to get this ceasefire and exchange of hostages as well. But it's very disappointing, very disappointing. शाइस्ता साहिबा जो हैं वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स की मेंबर हैं, आप जो हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में हैं। पाकिस्तान के लोग इस चीज़ को ऑब्वियसली यूके की डेमोक्रेसी को अंडरस्टैंड करते हैं, यही सिस्टम हम वहाँ लेकर गए हैं, नेशनल असम्बली और सेनेट जैसे पाकिस्तान में। दोनों का ज़रा डिफरेंस बताइए जो हमारी ऑडियंस है पाकिस्तान में।
जी बेसिकली ये टू हाउस जो होती हैं तो एक लोअर हाउस होता है, एक अपर हाउस होता है। तो जो लोअर हाउस है इसका जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये इलेक्टेड है, तो इनकी जो पावर है वो आवाम से डायरेक्ट आती है। और जो हाउस ऑफ लॉर्ड्स हैं जिसमें बारना साहब खुद हैं शास्ता, तो वहाँ पे अपॉइंटमेंट होती है, तो उसके डिफरेंट रूट हैं जैसे उन्होंने एक एक्सप्लेन किया है। तो उसमें जो मैं समझता हूँ स्ट्रेंथ है इस सिस्टम की वो ये है कि यहाँ पे अवामी नुमाइंदे होते हैं और वहाँ पे मोस्टली बहुत एक्सपीरियंस लोग होते हैं जिन्होंने ज़िंदगी को देखा हुआ है, मुख्तलिफ़ शोबों में एक्सपर्टीज़ रखते हैं। तो जो स्किल बेस है वो हाउस ऑफ लॉर्ड का है, वो हायर होता है मैं समझता हूँ। ये जो होते हैं हाउस ऑफ कॉमन्स में, इनको हम मजाक करते हैं कि ये जैक ऑफ ऑल ट्रेड होते हैं, एक्सपर्ट बहुत कम होते हैं जी। लेकिन वहाँ पे जो बैठे होते हैं क्योंकि वो बहुत सीनियर लेवल पे पहुँचे हुए हैं, हाँ हाँ, तो टुगेदर जो उनका पावर है मैं समझता हूँ नॉलेज की इस ह्यूज। जो दूसरी लेजिस्लेटिव पॉइंट ऑफ व्यू है तो लेजिस्लेशन का पॉइंट ये है कि दोनों जगह से लेजिस्लेशन शुरू हो सकता है, लेकिन जो पावर है वो नीचे लोअर हाउस में है कि इसकी जो है इसको वो हाउस ऑफ लॉर्ड वाले भी 2 बार रोक सकते हैं, तीसरी बार फिर वो नहीं रोकेंगे क्योंकि वो भी इस चीज़ को एक्सेप्ट करते हैं कि जो इलेक्टेड हैं वो सुपीरियर होते हैं, सो दे मस्ट लेट द लेजिस्लेशन गो थ्रू। लेकिन इस वक्त क्योंकि जो गवर्नमेंट है इनकी मेजॉरिटी अच्छी खासी है, तो अगेन मैं समझता हूँ ये तीसरा इंटरेस्टिंग पॉइंट है कि जो ब्रेकें हैं लेजिस्लेशन पे वो हाउस ऑफ लॉर्ड में लगती हैं क्योंकि वहाँ पे बैलेंस जो है वो मच बेटर है, क्योंकि यहाँ की उनकी मेजॉरिटी इतनी ज़्यादा है कि वो जो भी अगर अच्छा भी नहीं है कानून उसको भी वो पुश थ्रू कर सकते हैं क्योंकि नंबर की बात होती है। सो दिस इज़ इंटरेस्टिंग। I think the point I want to make about the House of Lords is Afzaal mentioned about the expertise. You've got former High Court judges, you've got top barristers, you've got leading business people, you've got professors, academics, top scientists, top doctors, and of course people from the charity sector. So all that expertise is really crucial. So when the legislation comes to the House of Lords, and if I may say, it's not often in a good shape. There are many gaps and there's many unfairness in there. There's things that are missing, there's things in there that we think is unfair. So we really, really tidy it up, and when we send it back to the House of Commons, we make the legislation better, the best that it can be to increase fairness. They have to tidy up your work. So आप लोग छोड़ देते हैं कोई कमियां कजियां उसके अंदर उनको करना पड़ता है ठीक. Quite interesting. Look, मैं तो समझता हूँ I loved the way she put it. yeah. Well, it's the best way of putting it. Look, the point यही है ना कि एक और एंगल भी इसमें है, वो ये है कि जो इलेक्टेड लोग होते हैं उनकी जो नज़र है वो वोट की तरफ होती है। तो क्योंकि हाउस ऑफ लॉर्ड्स में इलेक्शन का पॉइंट नहीं है तो वो उस साइड को साइड पे कर सकते हैं और फिर गुफ्तगू कर सकते हैं। और जैसे बारना शाइस्ता कह रही हैं क्योंकि ये क्रॉस पार्टी हैं तो वो पार्टी एलिमेंट जो है वो भी इनसे रिमूव हुआ है, तो बहुत ही न्यूट्रल तौर पे चीज़ को देख सकती हैं। और उस पर क्योंकि ये साइज़ भी है इनका अच्छा खासा 180 को कह रही हैं, तो दैट कैन स्विंग। जो पार्लियामेंट लोअर हाउस है उसमें फंडामेंटली डिवाइड है, आप अपोजिशन हैं या आप गवर्नमेंट हैं। सो सिंपल 2 लाइन डिवाइड है, जो भी पार्टियां हैं वो अपनी जगह पे हैं, लेकिन डिवाइड जो हाउस का है वो सिंपल है, यस नो। फ़हीम कियानी साहब, यहाँ तो हम बात करें हाउस ऑफ कॉमन्स में क्या होता है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में क्या होता है। पाकिस्तान के जब हालात देखते हैं आप, नेशनल असम्बली और सेनेट में वहाँ जो कुछ हो रहा होता है और अभी की जो सिचुएशन है उस पर क्या कमेंट करेंगे? क्योंकि बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी कंसर्न्ड हैं इस वक्त इकनॉमिक सिचुएशन को लेकर, पॉलिटिकल सिचुएशन को लेकर। देखिए कि कश्मीर के हवाले से मैं अक्सर कहता हूँ कि जनूबी एशिया का अमन का रास्ता श्रीनगर से होकर जाता है, कश्मीर की आज़ादी का रास्ता इस्लामाबाद से होकर जाता है। जितना इस्लामाबाद स्ट्रॉन्ग होगा पॉलिटिकली, इकनॉमिकली, हर हवाले से कश्मीर के अंदर ग़ुलामी की रात कम से कम तार होती जाएगी। तो मैं समझता हूँ कि जो इंस्टेबिलिटी है ये से हम बहुत ज़्यादा कंसर्न है, और ख़ुसूसन हम समझते हैं कि जो पॉलिटिकल डिवाइड है, जो नेशनल पॉलिसीज़, जो नेशनल इश्यूज़ के ऊपर से कश्मीर है
कि अभी तक कोई भी जिस 5 अगस्त 2019 के वाक़े के बाद एक ऑल पार्टीज़ मीटिंग नहीं हो सकी कश्मीर इशू के ऊपर। ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अभी आप देखें कि क्या हुआ कि मोदी ने अपने जो इक़दामात को सुप्रीम कोर्ट से विंडोज़ करवा दिया, अपोजिशन के साथ भी उसने इंटरेक्ट कर दिया। तो मोदी ने यह चाहा कि अगर कोई कांग्रेस मुस्तकबिल में आ भी जाए तो कांग्रेस मेरे किए हुए डिसीजंस को रिवर्स ना कर सके, तो उसने एक नेशनल कंसेंसस अपने पैदा करने की कोशिश की है। लेकिन अभी तक पाकिस्तान में 5 अगस्त 2019 के इक़दामात पर नेशनल कंसेंसस पैदा नहीं हो सका। फ़हीम कियानी साहब, प्रेसिडेंट तहरीक कश्मीर, MP अफजल खान, बैरनेस शाइस्ता गौहर, थैंक यू वेरी मच फॉर जॉइनिंग मी ऑन द शो। In this segment of today's episode, we are joined by Mr. Samuel Peter Terry, commonly known as Sam Terry, who's a British politician and the Member of Parliament since 2019 from Ilford South, representing the Labour Party. MP Terry has been an active supporter of trade union groups, working on this new deal, on a better deal for the working class. That's what he has been emphasizing on. And also, MP Terry has shown a great deal of concern for the humanitarian crisis in Gaza. And not only that, he's one of those 50 Labour MPs who voted in favour of an immediate ceasefire in Gaza. So thank you very much, MP Terry, for joining us on the show. So first of all, you are MP from Ilford South. When we look at Ilford, it's a very diversified community, a large number of Pakistani diaspora, Indians, Bengalis. So first of all, I would like to know how hard it is, how difficult or challenging it is to do your politics or to contest for an election from such a diversified community. It does present its unique challenges. I mean, it helps that Ilford's where I grew up, where I went to school, where I've lived, for most of my life, and that's kind of unusual for MPs. You can choose to be an MP and stand for election anywhere in the country. Yeah. I chose to stand, in my hometown, and so I've grown up alongside those communities. And of course, throughout my lifetime, Ilford has changed, but I think its diversity is absolutely its strength. It does mean, as a politician, you need to know about what's going on in Pakistan, what's going on in Bangladesh, maybe what's going on in India. We have the most diverse constituency in the whole of the UK. Yeah, it's 80% absolutely. ethnic minority, but it's not just one group, it's many different groups. And so sometimes, we need to manage challenges where political tensions perhaps are, coming from, people's country of heritage. But it can be more fun as well. I mean, India, Pakistan in the cricket, if you're on Ilford Lane when that's happening, then it's usually pretty wild. When so blood's boiling, blood pressure is high. People are absolutely cricket mad because obviously, you've got Bangladesh, Sri Lanka, you've got everyone who's into cricket. So, but it does present some challenges. So, for example, we are a community where we have lots of people who are very religious. We have a huge Muslim community. Probably the Muslim community is around 45 to 50% in total. We have a big Hindu and a big Sikh community, as well as a small Christian community as well. But broadly, those communities get on well. When there's problems or if one community is under attack, the other communities step in to protect them. And I think that's one of the great things. There are some politicians in the UK that would say multiculturalism doesn't work. But I would say come to Ilford and we'll prove you wrong every single time. But obviously, you'll have to do something to, keep a balance or create that harmony amongst the community. Is that challenging? It can be challenging because I'm quite outspoken as a politician. I'm well known to have spoken on the issue of Kashmir. I recently came back from a visit to Pakistan and to Kashmir. Now, of course, there will be some people in the Indian community who have a different perspective on that. But my view is very simple. If you have a strong set of principles around human rights and international law, you apply that equally for all communities. I'll give you an example. So I've done a lot of work over the years with the Sikh community. We have 2 or 3 really huge gurdwaras that serve, 20, 30,000 people. They're not only people that I've grown up with since I was very young, but they're also people that are concerned about the wider community. And actually one of the issues that happened over the last few years was the Punjabi farmers kind of revolution. And it was interesting to see how that played out in our community because in the past, many people in that part of the Indian community had perhaps been more pro-Modi and the Modi government. But that changed their perspective.
And it was interesting. I went to the Gurdwara last week and actually had a conversation with them about Palestine, about what was going on in Gaza. And for them to say, look, this isn't a Muslim issue, this is a human rights issue. And so my view is very clear. If you have a framework and a set of values and principles and you apply them fairly across all of the different communities, then that's fine. Some people would rather shy away from difficult issues, you know, but I wouldn't. You know, at the end of the day, I think it's important not just to turn away because something's difficult, you know, and that does mean that sometimes people might be angry with things that I've said, but also people, I think, are more respectful of the fact that I'll actually stand up and say what I believe. Too many politicians are too afraid to do that, and I'm definitely not afraid to do that. Yeah, and that's what I think you have been known for, being outspoken and blunt. Since you mentioned Palestine, you were one of those 50 Labour MPs who broke the ranks and voted in favour of immediate ceasefire in Gaza. Did you face any pressure from your own party leadership? I had conversations with our party leadership about it. I had conversations with our whips about it. If I'm being completely frank with you, I was lobbying our party leadership to change their position. Yeah. You know, it was the wrong position. It's been proven to be the wrong position. We're now in a position where we've been outflanked by the Conservative Lord Cameron, who's our new foreign minister, you know, calling today for, you know, a sustainable and long-term ceasefire. In fact, actually over the past few days since his piece in the Times newspaper at the weekend. And it's frustrating for me because the impact for the Labour Party is very deep in terms of community tensions. You know, there will definitely be MPs that possibly pay an electoral price for the position they took over Gaza at the next election. You know, I've not known in my community people to be that angry, perhaps since the days of the Iraq War. And that was a big mobilising force, and some Labour MPs lost their seats because of that. And I think, depending on whether the election, if the election happens, you know, in the next 6 months, there's a very good chance that it will have a direct electoral impact. Communities are very angry, they're disappointed in Labour, and I think that we made the wrong decision for the wrong reasons. And, you know, it's created huge levels of anger and tension within what are traditionally very loyal Labour voting communities. That's so true. We just cannot understand why we've taken this position. Yeah, and as you rightly mentioned, that this is not just a Muslim issue, it's a humanitarian crisis. It's a human rights violation that we have been seeing. I'm sure in the eyes of your own constituents, you must be a hero, because they must be seeing you as somebody who stood with humanity in this crisis. Don't you think that it's high time that Britain takes charge, not only to push for ceasefire, but also for a permanent solution, for a two-state solution? Yeah, look, definitely. That's been Labour Party policy for, you know, many decades. And there's been times when we've been more proactive in pushing for it. And there's been times when we've been less, you know, sort of forthright in pushing for that. The only way that we will have peace in the Holy Land is a viable and sustainable and economically, you know, growing Palestinian state. That is the only way, because otherwise the cycle of violence, the cycle of hatred will never end. You know, that has to happen alongside, you know, international law being adhered to in the end of a very brutal and long-term occupation. And going back to your point about it not being just a Muslim issue, that's absolutely right. So my father was a priest in Ilford for many, many decades, and he was very well known. Now, my parents' church, St John's in Seven Kings, they to this day still raise money for the Al Ali Hospital in Gaza, because it's one that's run by, you know, a collection of different churches, including the Anglican churches. So, of course, that just shows to me that the people of Ilford, whatever their background, are hugely concerned about this in terms of human rights, in terms of the huge violations of human rights that are underway, the brutal collective punishment that's underway. I mean, the scenes that have been unfolding in the past few days have just been, you know, more and more shocking. And I just think that anyone, you know, no matter where you're coming from, cannot support this kind of action. You know, we are headed now into a situation where legal experts, you know, I had a meeting last week with Dr. Ghassan, who had just returned from Gaza, where he was a surgeon. And, you know, that was one of the most harrowing meetings I've ever been in as an MP in my 4 years as an elected member of parliament. You know, MPs, maybe 30, 40 MPs there, people openly crying, you know, brought to tears by the shocking stories and the understanding that actually, you know, that the bombardment, that the attacks, you know, have a very clear purpose. And that purpose was to destroy the Palestinian health system within Gaza. Now, international legal experts would call that one thing,
and they would call that a form of genocide. Yeah. And I think this is now the territory we are into, and I will be pushing our party and obviously our government to make sure that people who've breached international law and have potentially created war crimes on whatever side of the conflict are brought to justice, and that the ICC should be heavily involved in this, because you know, this is one of the most brutal and one-sided conflicts we've seen in the history. Genocide. It is, I'm pushing afraid. Palestinians out of Gaza towards Jordan, towards Egypt. That's what we have been seeing. Moving on. Last year, you were sacked as Shadow Transport Minister. Okay, I see that smile on your face. I'm sure that you're going to tell us the actual reason, because there are a lot of stories behind this. The first reason we heard was that you joined the picket line in support of striking railway workers. But your party leadership then said that no, it was because of too many media appearances, which you did not ask permission for. So what is it? What happened actually? Well, all I would say to you is, if you look at the timeline of events, I was sacked before they came out and said it was anything to do with media appearances. Look, I'm a Labour Party MP. Labour Party is well over 100 years old. Labour Party was founded by the trade unions. I also happen to be a former trade union official. Yeah. I worked for railway unions for 8 years before becoming a member of Parliament. The Labour Party in this country actually has trade unions as part of its federal structure. They are part of the family that actually is the Labour Party. They have a vote on our National Executive Committee, the ones that are affiliated to Labour, that is. And so, you know, it's not just been part of the party, it's been part of a wider movement, a workers' movement. And it's the only movement that's ever brought anything of real justice for ordinary people in this country. And so when those unions said to me, look, Sam, the party leadership have turned around and said that people are going to be, who are shadow ministers, are banned from going on picket lines. I just thought, well, you know, I have to stand for the people that have stood with me, because that's what solidarity is. True. You know, and if you are looking to, you know, reciprocate that, you know, I wasn't necessarily expecting I would be sacked. I thought it was ludicrous that we had a straw man situation. A Labour MP is like going on a picket line. It's like saying, well, has the Pope visited the Vatican? You know, it's a completely unnecessary dividing line. And, you know, I'll be honest, my support and strength in the trade union movement has never been higher, because actually people want to stand in solidarity. And these strikes weren't against Labour. They're against a vicious, austerity-driven Conservative government. And actually, let's be honest, those strikes have been mostly successful. Yeah. Whether it be some of the doctors, whether it be some of the teachers, whether it be some of the rail workers, have achieved better pay rises through industrial action. And that, of course, is the purpose of being in a trade union. Right. So your country has been home to many immigrants from all over the world. I would like to talk about these new immigration laws. How do you think these laws are affecting Britain's working class? Because I was just looking at few statistics. Social care workers will not be allowed to bring dependents. They can't bring their partners, their children. Then the baseline minimum salary to be sponsored as a skilled worker, that will be now £38,700 from £26,200. Yeah, it's going to have a huge impact. It's had a huge impact already for people that I know. It's had a huge impact for, you know, people in Ilford, where it's not uncommon for people to be dual nationality holders, for people to get married to someone who isn't a British citizen. It is a very common thing to happen. And, you know, people don't necessarily choose who they fall in love with. People don't choose always, you know, think about that, about who they want to get married to. Yeah. That's not how things work. And it is very clearly a deliberate strategy to make it more difficult for migration to happen to this country. And I think that the rhetoric that the government are using, and in fact, actually, you would have seen over the past sort of 48 hours, Rishi Sunak was in Italy. You know, he was meeting with people which in the past the Conservative Party would never have associated with. They are, and I'll be quite blunt about this, extreme far-right politicians. They're not centre-right. They're not mainstream Christian Democrats or Conservatives. They are extremists, you know, to the point that one of the high-ranking politicians that he met, she'd actually been on record praising Mussolini. I mean, this is the sort of people that the Conservative Prime Minister is now aligning himself with. Is beyond the pale. So what we're seeing, and the reason I mention this, because it's important about understanding for your viewers about what's going on in the UK,
these hardline immigration policies, yes, of course, you can say they are about managing immigration, but my view is that they will not manage it in the way that we need. We have many jobs, whether it be in healthcare, whether it be in hospitality, that are unfilled. We have vacancies in agriculture where, you know, crops are not being picked because we don't have people here. Now, you're able to have a fair migration policy, but the problem is here, what's governing all of it is not actually what works, is actually rhetoric, and more extreme rhetoric. So what we've seen is that the far right in the UK electorally is almost spent as a force. The UK Independence Party, the British National Party, you know, they're dead for all intents and purposes. But what's happened is the mainstreaming of that language into the Conservative Party. So the recent Home Secretary, who obviously lost her job in the past few weeks, you know, is a classic example of that. I challenged her in Parliament and I said, you know, Minister, the last time I heard the language that you are using was when I was organising for anti-racism organisations in East London to get rid of an organisation called the British National Party, which was a neo-Nazi party. You've taken their language, the language of the far right, and brought it into the centre of the Conservative Party. Now, this is the lowest and most despicable kind of electoral politics. You know, it's trying to appeal to some of the worst elements in society. It's trying to divide people, and it's trying to create anger. And all it will do is create a more polarised society with more marginalised people. You know, that is not a sensible way to cut migration. Actually, we need to have much more progressive conversations about how, for example, where we have skills caps, you know, whether it be in social care or health, that we can actually set up arrangements where maybe, I mean, I, for example, recently visited Bangladesh, where I looked at a training facility where people will be trained to a UK standard of healthcare as nurses, and then will finish part of their training in the UK and be able to both work in the NHS, do a period of time working here to fill our skills gap, then go back to Bangladesh at a higher skills level and increase, you know, skills within their health service. You know, I have the same conversation with many Pakistani doctors, very highly skilled, you know, finding it increasingly difficult to get jobs here. But again, we have a huge jobs crisis. You know, there are ways, and it can, you know, a mixture of different options in terms of length of visas, you know. But not so these forth. measures where you are actually making other people's lives. No, not at all. And that's a huge increase, 26,000 to 38,000. Exactly. You know, that is going to mean that many tens of thousands of people are impacted. That's true. And actually, you know, most of those people are not the ones, you know, they're absolutely not the people that the government are talking about that are arriving in the country on boats. They're not asylum seekers or refugees. These are actually kind of just normal migrants who are, you know, here economically because their family ties are here as well. MP Terry, thank you very much for joining us. Pleasure, Thank my you. pleasure.